destiny of everything that is happening. So उस case में we will never be able to explain rapes, murders, thefts and all that stuff. Okay. Any other doubt? So let's start. We were seeing the contribution of Tyler in his book Primitive Culture, in which the first contribution was definition of culture. That is, it's a complex whole consisting of knowledge, belief, art, moral, laws, custom, or any other habits and capabilities which a man acquires being a member of the society. This second part is very important, which a man acquires being a member of society. What he was trying to emphasize that it is not something that we are born with. ये biological नहीं है. जैसे कि for example dogs, they are born and 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद they start roaming independently in search of food. अब उनको कोई उनकी मदर ट्रेनिंग नहीं दे रही है कि बेटा, और या फिर उनको कोई 10th पास नहीं करना है, 12th पास नहीं करना है और लैंग्वेज की कोई ट्रेनिंग मिलेगी. From the third, fourth day, they and they will come together only when they want milk. Okay, for breastfeeding they will come together and then they will part their ways. फिर वापस अपने खाने में, और within 1-2 months they stray dogs, they are completely independent. Our case is like we are dependent on our parents for 25-26 years जब तक UPSC नहीं निकलेगा. So in that case, see the case. So we actually for this 25-26 years till we become self-dependent, what are we doing? We are actually learning all those skills that could make us self-dependent. So that is what he is saying, that culture is something that a man, all the behavior that a man acquires being a member of the society, not something that is biological in nature. It's not genetic, it's not by birth, but we learn it when we are part of the society, and that's why it is said that man is a social animal. Okay. Second, in his book, he wanted to reconstruct the past by using 3 methods. First one is uniformitarianism, through which idea of psychic unity of mankind was derived. Okay, that every man thinks similar, there are universal cognitive processes, and जिसकी वजह से since there is universal cognitive processes, the trajectory of culture evolution will be same. So due to this, there will all the culture will have same trajectory of growth. Okay. Second is use of comparative method. Third is the doctrine of survivals as a proof of evolution. ठीक है. Now एक और contribution था उनका जो दूसरी बुक में था, that is research of early history of mankind and development of civilization. In that book, he has also given the idea of origin of language. That language originated in the form of gestures. Okay. So ये इनके अभी तक के major contribution थे. The next one we'll see is the idea of origin of religion. If you remember, in last class I told you कि जब Tyler he was a part of Quaker community, एक religious minority थी, जिसकी वजह से he was not given admission in Oxford and Cambridge. Just because कि Oxford और Cambridge में the one who abide to Church of England और Catholic Church को Catholic जो थे उनको ही admission मिलता है, and that's why he developed some kind of agnosticism towards religion, and which was actually reflected in when he will be talking about religion. So let's see. So when he wanted to talk about origin of religion, he said that religion, just like other institution of culture, is the product of human mind. ह्यूमन माइंड ही ने ही रिलीजन बनाया है. ऐसा नहीं है कि रिलीजन और ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करती थी. धीरे धीरे ह्यूमन की एक थिंकिंग पैटर्न थी, यूनिवर्सल थिंकिंग पैटर्न थी, जिसकी वजह से हर सोसाइटी में रिलीजन आया. एंड दैट इज व्हाई रिलीजन इज समथिंग universal. Why religion is universal? First, because it is a product of human mind, and second, human mind thinks similarly, or there are universal process of cognition across the world. तो इसलिए हर सोसाइटी में, हर कल्चर में you will find religion. There is no society without religion. ठीक है, पहला. So here he says that कि religion है क्या? तो he says that religion is belief in supernatural beings or belief in soul. Religion is nothing but belief in supernatural beings or belief in soul. अब ये religion आया कैसे, origin कैसे हुआ? Just listen to me and I'll dictate then. So religion origin कैसे हुआ and उसका evolution कैसे हुआ? तो he says that religion originated in the form of animism, evolved to polytheism, and then to monotheism. ठीक है. And how did he came to this conclusion? He actually studied a lot of myths, legends, stories of several societies or several accounts of several scholars जो कहीं कहीं पे गए थे, missionaries, travelers and all. And he saw that कि there are a lot of similarities across myths, across legends. कई सारी कहानियों में बहुत सारी similarities है. हर society में you will find myth about sun, हर society में you will find myth about moon, myth about eclipse, myth about a lot of common things. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि yes, ये भी proof है कि हर society के religion की trajectory भी same रहेगी. और religion की trajectory same होने के लिए the trajectory will be animism to polytheism to monotheism. ठीक है. Now he says that in the simple societies or in the tribal societies, they are not able to think abstractly. Abstract सोच नहीं सकते ये लोग. That means, for example, if these are chairs, right? यहाँ पे class बहुत सारी chairs हैं. You will, when you will be writing about it, so you will say that ये सब similar हैं, and you write it that there are say 50 chairs in the class. But here what he says that these tribal people, they cannot think like this. For them, every chair is a unique thing. They cannot count. So उनकी counting जो थी वो limited on only fingers. So they cannot think abstractly. And here that is why every tree, every wood, every flower was something, a unique object in the eyes of the tribal. Okay. And now these objects has a unique identity, and that is why the second thing he says that these people, these tribal people, they were never able to comprehend natural events like flood, thunder, anything like that. तो दो चीजें थी. पहला कि जितनी भी चीजें उनके अराउंड थी वो सबकी यूनिक आइडेंटिटी थी.
and second, they were never able to comprehend. They were not knowing any reason for thunder, flood, rain, drought, whatever is happening around it. So what happens? He says that religion originated because of speculation about dreams, trances, and death. People wanted to understand when tribal they used to sleep, they were getting dreams in their mind. सोते समय सबको सपना आ रहा था. या फिर when they experience trance state. Okay, trance state, that means everything is blurred. Means a trance is usually associated when we are under medication. Okay, कोई ओपीएम या इस टाइप की कोई मेडिकेशन हो जहाँ पे बेसिकली थोड़ा नशा होता है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस स्टेट, साइकोट्रोपिक ड्रग्स जिसको कहते हैं. ओके, so they were speculation about dreams, trances and death led to the idea of soul. कैसे? So when they thought about कि ये ड्रीम्स आती क्यों हैं, एंड ड्रीम्स में ऐसे लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिनकी मौत हो चुकी है, somebody who has died is also coming in their dreams, or not just the people, trees, woods, flowers, they are also coming in their dreams. How do they interpret this? So he says that कि this speculation about dreams, they thought that कि यहाँ पे ये हर इंडिविजुअल की डुअल एग्जिस्टेंस होती है. एक वन द फिजिकल विजिबल बॉडी, ओके, दैट इज जो हम लोग जैसे देख रहे हैं व्हेन वी आर अवेक, एंड सेकंड इज साइकिक इनविजिबल सोल दैट कैन लीव द बॉडी, दैट कैन ट्रैवल इनटू द माइंड. ठीक है, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड ड्रीम्स दे सेइंग दैट कि जो लोग हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ऑल्दो उनकी डेथ हो चुकी है, तो दे ऑल्दो द फिजिकल विजिबल बॉडी इज नॉट विजिबल, मतलब नॉट अवेलेबल, बट देयर सोल इज कमिंग इनटू आवर माइंड. तो यहां से इन लोगों ने कंक्लूड किया दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सोल ऑफ इटसेल्फ. पहला जो मैंने आपको बताया था कि वो हर ऑब्जेक्ट को यूनिक मानते थे, एंड यहाँ पे ड्रीम्स को स्पेकुलेट करते हुए उन्होंने बोला कि हर ऑब्जेक्ट का अपना सोल होगा. So this, even this podium also has a soul of its own. It is glass, this pen, everything. Why? Because we are seeing this in our dream. And when interpreting these dreams, we come to that conclusion that there is dual existence of anything. One is the physical visible body, and second is psychic invisible soul. And this soul is something that can travel into the dreams, that can travel into our minds. And this was the first form of religion in every society. That is animism. Animism means that belief in soul, that every object has its own unique soul. Jainism में भी हम ये मानते हैं. Okay, everything has a soul of its own. So animism was the most primitive form of religion according to Tyler. And this animism पे belief कहाँ से आई? Just by speculation of dreams. ठीक है, dreams को कैसे interpret किया उसके basis पे उन्होंने बोला कि animism. Okay, now the second thing that he said कि they were not able to speculate or they were not able to understand the reasons for natural events. ठीक है, so to understand every natural event, they associated one god with it. ठीक है, तो रेन के लिए कोई गॉड हो गया, ड्रॉट के लिए कोई गॉड हो गया, अर्थ के लिए कोई और गॉड हो गया, पेड़ कोई और, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जिन जिन चीजों के उनके पास रीजन नहीं थे, they started assigning a particular character who will be responsible for that particular event, and that led to the birth of polytheism, multiple gods. But gradually, as our rationale, our knowledge actually started to develop, society हमारी develop होती गई, so the next form of religion was monotheism. And you can understand the logic of it. Why monotheism? Because they were following Christianity, and Christianity is a monotheistic religion, and Europe अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर मानता था. So definitely they will label monotheism as the most supreme form of religion, and this is how this order was established, from animism to polytheism to monotheism. इसमें कोई डाउट है? ये समझ में आया कि कहाँ से ये लॉजिक आया कि पहले एनिमिज्म होगा, फिर पॉली एंड देन मोनो? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, देन राइट. अकॉर्डिंग टू टाइलर, religion is belief in supernatural. religion is belief in religion is belief in religion is belief in religion is belief in supernatural being or soul. Religion is belief in supernatural being or soul. It is a cultural universal. It is a cultural universal. Cultural universal means every society has it. It's a cultural universal, and no known society is without religion. Is without religion. Religion originated as belief in soul. Religion originated as belief in soul. In bracket you can write animism. Next paragraph, the defining characteristic
of primitive mind was its inability. Defining characteristic of primitive mind was its inability to think abstractly. Think abstractly. They were unable to group. They were unable to group similar objects. They were unable to group similar objects into categories. Into categories. Each object, each object had a unique identity. Had a unique identity. Primitives, primitives, thus were immersed in primitive thus were immersed in world of singular objects. Immersed in world of singular objects. Okay. Second point, next paragraph. Primitives were unable to primitives were unable to comprehend primitives were unable to comprehend or understand events like thunder, thunder, rain, flood, drought, etc. Events like thunder, rain, flood, etc. They had no idea. They had no idea of natural laws. Okay. Now next point. Primitive man, primitive man observed, primitive man observed soul, soul, S-O-U-L, soul, making man live or dead, live or dead. Religion, religion, according to Tyler, religion according to Tyler originated, religion according to Tyler originated from speculation of dreams, trances, and death. Dreams, trances, and death. Speculation of dreams, trances, and death. Lifelike appearances, lifelike appearances of dead persons, lifelike appearances of dead persons in the dreams, in the dreams made them believe, made them believe in dual existence, in dual existence. First, physical visible body, physical visible body, and second,
psychic invisible soul, psychic invisible soul. This invisible soul, or this soul, was the reason for appearance of dead people. This soul was reason for appearance of dead people in the dreams. The belief the belief extended to include the belief extended to include other living and non-living objects, as other non-living living and non-living objects, as all used to appear in the dreams, as all used to appear in the dreams. Hence hence savage savage began to realize hence savage began to realize everything has a body and a soul. Everything has a body, sorry, life and soul, not body, sorry, life and soul. And this is how animism came into existence. So right, this sequence लिख लो: animism, polytheism and monotheism. So he uses the word very इन्होंने जब ये primitive culture book में जब religion का origin की बात की, तो he uses a word, very cliche word, savage philosophers. He says this word कि ये जो savagery age में भी philosophers थे, means philosophers are the one जिसको आप लोगों ने हिंदी में अगर देखा, आप अगर philosophy को कहते हैं दर्शन शास्त्र. Okay, that is somebody who can imagine something which is not explicitly mentioned, something explicitly written, said or whatever. So ये इन्होंने बोला कि ये जो the one who were speculating or thinking about dreams, they were nothing but savage philosophers. Okay, and they gave the reason that yes, ये जो dreams हैं, it is because of something that is beyond this visible body. Okay, and that is invisible, that can travel to your mind. Okay, and that is the soul. And since dreams में not just human beings were coming, but also आसपास के appearances, objects, and everything was coming into the dream, so they started believing that everything has life and soul, or everything has soul of its own, everything has unique identity, and that is why animism came into existence. So this is how, and then the sequence was from animism we came to polytheism. So the shift, reason for polytheism का मतलब होता है belief in multiple gods at the same time. Okay, that is polytheism. So Hinduism is a polytheistic religion. Now, why polytheism? As I have told you that they did not have any kind of idea about the happenings in the world, okay, like thunder or rain or flood or drought, and they started assigning the reason, means कोई logical answer था नहीं, तो they started believing that this is being done by some supernatural being, some supernatural power, some supernatural soul. ठीक है, ये इसके लिए responsible है, and hence the belief shifted to polytheism, and then with rationality came monotheism. ठीक है, sir, is contemporary tribal society also at animistic stage or they have evolved? Actually देखो, जब तक मैं ये थ्योरी बता रहा हूँ तब तक आपको ये लगेगा कि ये तो सही बात बोल रहा है, but the moment I will shift to its criticism, you will realize कि ये तो बहुत ही फालतू थ्योरी थी, and actually this is a very फालतू सी थ्योरी. अब आप कहोगे कि यार फिर इतना टाइम देके पढ़ाया क्यों? प्रॉब्लम यही है कि शुरुआत इसी से करेंगे. ओके, सबसे पहली थ्योरी थी, बट इट हैज बीन लार्जली रिजेक्टेड. बट यस, कंटेम्पररी ट्राइबल सोसाइटीज डू बिलीव इन एनिमिज्म. इन फैक्ट व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब उन्होंने सेंसस कराया था पहली बार इंडिया में, so 1871 census started, and from then on there was a effort by British government to distinguish between tribe and caste. And the first criteria, or one of the most earliest criteria they used to distinguish tribe from caste, was that tribe believe in animism. And the reason for this was this theory itself. ठीक है, कोई भी थ्योरी इज नॉट मेड इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम. हर थ्योरी उस पर्टिकुलर टाइम के सोशो पॉलिटिकल एनवायरमेंट के हिसाब से होती है, to support the existing power. And I have told you कि कैसे ये सब theories they were justifying the colonial rule, since they were saying कि हर culture का trajectory क्या होगा, savagery to barbarism to civilization, right? तो अगर हम इनको savage के पास जाके उनको अपने civilization के rules दे रहे हैं, तो क्या problem है? अब देखो कि इस बात को justify, अब देखो अगर if I'm saying that कि every culture is move from savagery to barbarism to civilization, तो फिर आपकी जरूरत क्या है यार, मैं तो अपने हिसाब से move कर जाऊंगा. तो उन्होंने एक कैविएट इसमें डाला. इनफैक्ट टाइलर की बुक्स जब आप पढ़ोगे, या और भी बाकी स्कॉलर्स की बुक वगैरह, कभी आप मतलब जब आईएएस वाईएएस बन गए उसके बाद तपासना में टाइम मिला, अभी नहीं आपके पास टाइम है, अभी आप यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने नहीं आए हो,
तो व्हाट एक्चुअली यू कैन डू, तो वहाँ पे उन्होंने एक कैवेट डाला कि यार पता है कि ये ज़रूरी नहीं कि तीनों स्टेजेस को आपको मतलब सारे स्टेजेस को पार ही करना होगा तभी आप सिविलाइजेशन तक पहुँचोगे। आप कोई स्टेज मिस भी कर सकते हो। ये कैवेट क्यों था? कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए। ज़रूरी थोड़ी ना कि सैवेज हो तो बार्बरिज़्म बनना ही बनना है, ठीक है? हम तुम्हारा वो सीधा ही सिविलाइजेशन में ले आएँगे तुमको। ऑल्दो दिस वाज़ नॉट मेंशन्ड बट इट इज़ समथिंग रिटन इन बिटवीन द लाइन्स। जब ये किसी ने बोल दिया कि ज़रूरी नहीं कि बार्बरिक होना ही होगा, आपको सैवेज से या सैवेज सबको सारे स्टेजेस पार करने ही होंगे। तो इट वाज़ समथिंग अनइंटेंशनली सेड कि अगर ये लोग रूल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, कोलोनाइजेशन हो रहा है, इट इज़ ओके, इट इज़ टू कोलोनाइज़ सॉरी सिविलाइज़ देम, ओके? एंड yet remember, like अभी भी if you have heard that speech of Shashi Tharoor in Oxford, wherein he was talking about कि British government owes us an apology. If you have, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स आज भी ये बात बोलते हैं कि हमने इंडिया को सिविलाइज़ किया, हमने इंडिया को रेलवेज़ दिए, हमने इंडिया को टेलीफ़ोन और पता नहीं क्या-क्या दिया. Okay, and it is still this theory that makes them justify that the colonization has led to the development of world, has promoted globalization, जिसकी वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ट्रेड्स वगैरह सब कुछ हो पाए हैं. Okay, so I was the question was कि animistic stage. So yes, they do believe in animism, but we also believe in animism, don't we? Remember the judgment of Uttarakhand court, High Court? गंगा और यमुना को लिविंग बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया था. द मोमेंट दे डिक्लेयर्ड गंगा और तो इसका मतलब क्या है? जब लिविंग बॉडी है वो, तो दैट इज द बिलीफ इन सोल, ठीक है? और आप लोगों की कॉपी या बुक गिर जाती है, तो यू डू लाइक दिस, ठीक है? व्हाट इज दिस? तो यू आर ट्रीटिंग योर दिस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज समथिंग लाइक लिविंग हैव, तो आप उसको उसी ग्रेस के साथ रखते हो. जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को रखोगे, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, तो यू डोंट जस्ट थ्रो योर कॉपी लाइक दिस, ठीक है? बट टिल द टाइम यू क्वालिफाई यूपीएससी, तो आपके लिए कॉपी यही भगवान है बस. रोज सुबह उठ के ऐसे ही इसकी पूजा करनी है, मतलब पढ़ना भी है, पूजा नहीं करनी. तो दिस इज वी बिलीव दैट दीज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स डू हैव सोल. एनिमिज्म में तो हम भी मानते हैं, ठीक है? बट आर वी ट्राइबल और आर वी प्रिमिटिव, सो कॉल्ड प्रिमिटिव? नो. ओके, तो यस, एनिमिज्म काफी सारे कल्चर्स में है एंड इट इज नो एक्चुअली नॉट एट ऑल आइडेंटिटी ऑफ सम बैकवर्ड कल्चर, बट दिस वाज द आइडिया दैट वाज गिवन बाय द स्कॉलर्स ऑफ एवोल्यूशनिस्ट थ्योरी, ठीक है? कोई डाउट है? एब्स्ट्रैक्ट अगर आप सोच पा रहे हो ना, तो आप चीजों को कैटेगराइज कर पाओगे. क्या? नहीं नहीं, सोल नहीं, फिर आप यूनिकनेस नहीं कंसीडर कर पाओगे. हाँ, तो जब एब्स्ट्रैक्ट सोचोगे तो दीज आर ऑल चेयर्स, ठीक है? मैं इसको रिप्लेस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये सब चेयर्स ही तो हैं. बट व्हेन आई एम सेइंग कि दीज आर यूनिक चेयर्स, ठीक है? अब आपके जैसे क्या हो जाएगा कुछ टाइम बाद, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस लाइक इन व्हाटएवर लिमिटेड टीचिंग एक्सपीरियंस आई डू हैव, उसमें मैंने देखा है कि आप शुरू में आके अपनी-अपनी जगह देखते हो, लड़ते हो और क्लास में ना 10 मिनट पहले आते हो बिकॉज़ यू वांट टू सिट इन अ सर्टेन प्लेस, ठीक है? बट 10-12 दिन बाद व्हाट विल हैपन, दैट प्लेस इज ऑटोमेटिकली रिजर्व्ड फॉर यू. ठीक है? वहाँ पे कोई और नहीं बैठेगा, सब कोई अपनी-अपनी जगह पे एडजस्ट कर चुका है. एंड एवरी डे यू विल फाइंड दैट मोर और लेस पीपल से सिट इन द सिमिलर प्लेस. एंड एक्सीडेंटली अगर आपको वो चेयर ना मिले या उस लोकेशन पे वो चेयर ना मिले, तो दैट डे यू फील कि कुछ गड़बड़ है क्लास में, कुछ आज समझ नहीं आया या मज़ा नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो रही है. ओके? सो दैट इज़ इनेबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली. तो क्या वो चेयर आपके लिए यूनिक हो चुकी है? वो लोकेशन आपके लिए यूनिक हो चुकी है उस क्लास की? दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से कि हर चेयर अब यूनिक हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो चेयर जो जिस पे आप बैठते हो, यू फील लाइक दैट इज़ योर चेयर एंड रेस्ट ऑल इज़ नॉट योर्स. यू आर डिस्टिंग्विशिंग इट. एनीथिंग एल्स? फ्रांसिस, आई टोल्ड यू कि जब साइकोट्रोपिक ड्रग्स वगैरह लेते हैं या फिर दारू-वारू पीने के बाद या ओपियम-वोपियम लेने के बाद जो हालत होती है आदमी की, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ अ ट्रांस स्टेट. आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, तो वैसे अपना सर्वर घुमा रहे होते हैं या फिर कोई जागरण वगैरह में, तो कुछ कुछ लोगों को जिसको कहते हैं कि माता चढ़ गई है या वो, तो वो स्टेट जो होता है वो ट्रांस होता है. अब और माता चढ़ गई मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब इट्स समथिंग स्टेट ऑफ माइंड ओनली. हाँ, सॉरी मास्क. रिलीजन कैसे ओरिजिनेट हो गया? वही तो बताया कि ड्रीम्स में जब लोग आ रहे थे, वो लोग मर चुके थे. तो लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ये तो मर गए हैं और मेरे ड्रीम में आ रहे हैं. तो दे स्टार्टेड थिंकिंग सेइंग दैट कि दो एक्जिस्टेंस होती है एक आदमी की. एक जो बॉडी है और दूसरा जो है सोल. और वो सोल हमारे दिमाग में आ रहा है. ठीक है? तो दैट इज़ हाउ दे स्टार्टेड बिलीविंग इन सोल एंड दे स्टार्टेड टू बिलीव दैट कि सिंस आदमी के तो सोल आ भी रहे हैं और साथ-साथ ये चेयर भी मेरे दिमाग में, मतलब आप सो रहे हो रात में और आपके दिमाग में एंथ्रोपोलॉजी की क्लास आ रही है. तो उसमें आप चेयर्स भी देख रहे हो, ये पोडियम भी देख रहे हो. तो दैट मीन्स इन पोडियम का भी सोल है, उस चेयर्स के भी सोल है. दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इंटू योर माइंड. ओके, so this is how the first form of religion actually began, that is animism, belief in soul. Second form of religion, polytheism, क्यों आया? Because they do not have any logical answers for the natural events that were happening. ठीक है कि ड्रॉट, फ्लड, थंडर ये सब क्यों हो रहा है? So they started assigning them कि कोई गॉड या कोई पर्टिकुलर गॉड इज रिस्पांसिबल फॉर थंडर, गॉड हो जाएगा. जैसे कि हमारे सिविलाइजेशन में थे वायुदेव, अग्निदेव, ठीक है, इंद्रदेव. तो इंद्र फॉर रेन, वायु फॉर विंड, अग्नि फॉर फायर एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हम लोगों ने नेचर के हिसाब से या नेचुरल फिनोमेना के हिसाब से उनको असाइन कर दिया कि ये पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए रिस्पांसिबल होंगे. ठीक है? एंड देन फाइनली एज रैशनैलिटी केम, so we started believing in singular god, that is monotheism. This is what he says. Yes. देखो, यस ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सैवेज के केस में एनिमिज्म बोला था, बट ऑल्दो ही डिड नेवर सेड लाइक दिस कि ये ऐसा होगा, बट इन्होंने सैवेज के स्टेट में एनिमिज्म बोला था और सिविलाइजेशन के केस में मोनोथिज्म बोला था. ठीक है? इनके हिसाब से यस, तभी तो इंडिया को कोलोनाइजेशन अलाउड था, मतलब इंडिया के ऊपर कॉलोनियल रूल था और दे वर सपोर्टिंग इट. ठीक है? एनीथिंग एल्स? Hmm. If today we are in a monotheism stage and that Uttarakhand court example is an animistic state, then won't it contradict the universal nature of stages? Yes, तो सही है, ये तो आप क्रिटिसिज्म बता रहे हो इस थ्योरी की, जो हम बाद में करेंगे. मैंने तो आपको पहले बोल दिया ये बहुत फालतू थ्योरी है. ठीक है? तो दिस इज नो मोर. देखो, पहली बात तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इंजीनियरिंग माइंडसेट वाला कि इंजीनियरिंग में कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अब दुनिया भर में वो वैलिड होगा. ये लॉ नहीं है. व्हेन आई एम सेइंग दैट कि, तो आई गिव यू 4 सीरीज, लाइक देयर इज अ डॉक्ट्रिन
तो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं और वो हमारा पाथ ऑफ वर्क है, मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, डॉक्ट्रिन, ठीक है। देन देयर इज अ हाइपोथेसिस कि ए इज रिलेटेड टू बी इन सच एंड सच मैनर, दैट इज व्हाट आई वांट टू चेक। एंड हाइपोथेसिस जब थोड़ी बहुत जगह वैलिड हो जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है। एंड देन फाइनली देयर इज अ लॉ, लॉ जैसे कि जो हम लोग नेचुरल साइंसेस में पढ़ते हैं, फिजिक्स, लॉ ऑफ मोशन। सो आई नेवर सेड दैट दिस इज अ लॉ ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, आई एम सेइंग दिस इज अ थ्योरी ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशन। दैट मीन्स समबडी प्रपोज्ड इट, हम पहले उस थ्योरी को पढ़ेंगे, उन्होंने जहाँ-जहाँ पे प्रूव दिया उसको देखेंगे, एंड देन वी विल से वी विल क्रिटिसाइज इट। देखो यहाँ पे तो वैलिड नहीं है, यहाँ पे भी वैलिड नहीं है, बहुत-बहुत जगह पे आपने फालतू बात बोल दी। ओके, बट इनिशियली आई विल टेल यू विद सो मच ऑफ कन्विक्शन कि आपको लगेगा हाँ, ये तो सही बात है। ओके, बट लेटर ऑन क्रिटिसिज्म भी उतनी ही कन्विक्शन के साथ करेंगे। So what you are saying is absolutely correct and that forms the part of criticism. So I'm not saying that this is something universally valid हर जगह पे सही होगी, but you need to understand it first कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। Is it clear? तो आप वो इंजीनियरिंग वाले माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलो। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। एंड डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीज़ पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ माई सेल्फ आल्सो बाय ग्रेजुएशन आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। हॉबी है, आई टोल्ड यू कि इंजीनियर्स की यूपीएससी की तैयारी करना, तो आई आल्सो लेफ्ट माय गुड पेइंग जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड देन आई एंडेड अप बीइंग एंथ्रोपोलॉजी फैकल्टी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रिलीजन और एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइलर, ठीक है। अब एक हेडिंग लिख लो, समरी। टाइलर की जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप समरी एक लिख लो। टाइलर adopted Clem's Tyler adopted Clem's, if you remember Gustav Clem's term culture, Gustav Clem's or Clem's term culture, comma, Comte's three-stage, Comte, Gustav Clem's or Clem's term, Tyler adopted Clem's, if you remember Gustav Clem's term culture, Gustav Clem's or Clem's term culture, comma, Comte's three-stage, Comte's, Auguste Comte's three-stage, theological, metaphysical and positive. So Comte's three-stage, but terminology of Montesquieu. Terminology of Montesquieu, in bracket savagery, barbarism and civilization, ये तीनों से उनकी theory of evolution शुरू हुई, ठीक है। He proposed anthropology as a science of culture. He proposed anthropology as a science of culture. His science of culture had three essential premises. First one, the existence of one culture. आप इसका मतलब समझ रहे हो, existence of one culture क्या है? Anybody would like to explain existence of one culture? Anybody would like to tell me? एंड रिजल्ट सेम रहेगा, मतलब यस, कल्चर सबका सेम है, हर कोई अलग अलग लेवल पे है, एंड दैट इज व्हाई द ट्रेजेक्टरी विल बी सिमिलर। तो ऑल आर एट द सेम ट्रेजेक्टरी, कल्चर सबका सेम है, बट सब स्टेजेस अलग अलग पे हैं। तो लाइक आप एजुकेशन में भी आप लाइक ग्रेजुएट हो गए हो, somebody is at क्लास फर्स्ट, somebody is in क्लास फिफ्थ, बट अल्टीमेटली सबका लाइन ऑफ प्रोग्रेशन वही रहेगा, वो एलकेजी से शुरू करके दे विल मूव टूवर्ड्स ग्रेजुएशन। ओके, so this is the existence of one culture. Second, its development through one progression. That is same trajectory. And third, humanity united by one mind. Humanity united by one mind. So one culture, one progression, one mind. This is the core of his idea. Humanity united by one mind. That is psychic unity of mankind. ठीक है?
one culture, one progression, one mind. Next line. all society all society were essentially all society were essentially alike. All society were essentially alike and capable of being ranked and capable of being ranked by different levels of cultural advancement. By different level of cultural advancement. Last line. Progression from savage to civilized. Progression from savage to civilized did not occur evenly, did not occur evenly or at same pace or at same pace, but but distinct stages distinct stages will always be the same, will always be the same. ठीक है, मतलब हर सोसाइटी सेम पेस पे प्रोग्रेस तो नहीं करेगी, लेकिन सब सोसाइटी सेम स्टेजेस के थ्रू पास जरूर करेगी. This is the summary of what Tyler had said, and then you can talk about like the definition of culture, the origin of language, and the origin of religion that Tyler gave. ठीक है, so this is all about Tyler. Now let's see the criticism of his opinion. In fact, the criticism मैं आपको बता रहा हूँ, this is overall valid for entire classical evolution theory. But we'll see scholar wise criticism क्या है. So first one, ranking of societies. Just listen पहले and then आपको लिख लेना साथ कि ये जो ranking है society की based on evolution, based on progress, it is tainted. यार वो आप जिसको प्रोग्रेस मान रहे हो, बेसिकली यू आर अज्यूमिंग कि दिस बोर्ड, दिस ये सब ये प्रोग्रेस है. बट एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया, लेट मी टेल यू, इन द ट्राइबल्स पिग्मीज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. ठीक है, तो पिग्मीज और ऐसे कई सारे हंटर गैदरर्स में, और उनकी बॉडी में डोपामिन लेवल जो होता है वो काफी हाई था. अब डोपामिन आप जानते हो एक केमिकल है, दैट हार्मोन है, तो बेसिकली हैप्पीनेस के लिए रिस्पांसिबल है. बॉडी में डोपामिन बहुत ज्यादा हाई है, दैट मींस यू आर वेरी मच सैटिस्फाइड, यू आर वेरी मच कंटेंट, डिप्रेशन में नहीं हो. ठीक है, नॉर्मली जो अर्बन एरियाज में जब ये एक्सपेरिमेंट या फिर नॉर्मल सैंपल टेस्ट किया जाता है, जैसे पीपल ऑफ मुंबई और दिल्ली, दे हैव रिलेटिवली लोअर डोपामिन लेवल देन पीपल ऑफ टियर 2 cities, and they will have relatively less dopamine level compared to people of tier 3 cities, and which will have relatively less dopamine level compared to villages, and so on when you move to tribe. ये तो नेक्स्ट लेवल है. मींस ये जो उसने बोला कि खुश यार हम लोग यार बचपन से अभी तक वो पढ़ ही रहे हैं, मम्मी ने बोला कि 10 पास कर लेगा काम चल जाएगा, फिर उसके बाद मजे मजे, फिर बोला कि 12 कर लो यार, एक बार 12 बढ़िया से हो गया, आईटी मिल गई, जिंदगी बढ़िया हो गई. आईटी करने के बाद भी लग रहा है कि यार जिंदगी में कुछ नहीं है, फिर यूपीएससी करनी पड़ेगी. द मोमेंट यू एंटर इनटू, अभी यूपीएससी में ये लॉलीपॉप दिया गया है कि एक बार आगे बनने के साथ पूछते हैं खबर जाती है इतना पैसा होगा, सब कुछ होगा. द मोमेंट यू एंटर इनटू सिविल सर्विस, आपको लगेगा कि यार अब सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं, बेकार है फिर तो. और फिर वहां पे लगेगा कि 10वीं फेल है, एमएलए एमपी आके गाली देके चला जाता है, क्या फायदा 10वीं पास करने का फिर. तो एंटायरली ये कौन सी हैप्पीनेस है? टाइप का क्या है, हंटर गैदरर्स हैं, सुबह उठे आधे घंटे के लिए जाते हैं, हंटर क्या है, जानवर मार के लिए क्या है, बैठेंगे कैंप फायर लगाएंगे, वहां पे आसपास डांस करते हैं, दारू पीते हैं, सो जाओ. कोई यूपीएससी की टेंशन नहीं, कोई करियर के गोल्स नहीं, कुछ नहीं. कौन ज्यादा खुश है? बट ऑब्वियसली वो ज्यादा खुश है. यू आर फाइटिंग लाइक कि पूरी जिंदगी बीत जाती है, सोचते हैं कि दिल्ली में यार 100 बाई 100 का एक प्लॉट मिल जाए या 10 बाई 50 का एक प्लॉट मिल जाए, जिसमें अपना घर बना ले. ठीक है, उसके लिए आपकी नौकरी से तो वो पैसा नहीं मिलेगा कि दिल्ली के ठीक-ठाक एरिया में आप लोग एक अच्छा घर बना पाओ, नहीं बनेगा. ठीक है, लेकिन हाँ उसके लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा करप्शन का, इधर से थोड़े पैसे मिल जाए और फिर वो पैसे को कैसे एडजस्ट करके पैसा लगेगा कि करप्शन के पैसे से घर बनाए. उनको टेंशन, उनको पूरा जंगल है. ठीक है, आप छोटे-छोटे प्लॉट के लिए मर रहे हो, उनके पास पूरा जंगल है, जहां वो कितना आपका है, वो जहां तक मेरा मिल रहा है. ओके, so how can you say that we have actually, so the idea of progress, what I wanted to say is a subjective idea. हर किसी के लिए प्रोग्रेस का मतलब उसके कल्चर पे डिपेंड करता है. अब हमारे कल्चर में यस, दिस इज द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, मटेरियल बेनिफिट्स, और आपके लिए प्रोग्रेस है मींस हाउ मच मनी यू हैव एट योर डिस्पोजल. उनके लिए प्रोग्रेस का मतलब है कि आप वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, मींस उनको एक दिन रोज हंट के लिए कुछ मिल जाए एंड नोबडी कम्स एंड डिस्टर्ब देम, उनके लिए वो प्रोग्रेस है. तो दिस रैंकिंग इज फ्लॉड, और व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज एंथ्रोपोलॉजिकली एथनोसेंट्रिक बिहेवियर. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जज कर रहे हो. नो कल्चर कैन बी एक्चुअली रैंक्ड विद रिस्पेक्ट टू अनदर. सो दिस आइडिया ऑफ रैंकिंग इज एक्चुअली टेंटेड और प्रेजुडिस. आर गेटिंग दिस आइडिया? क्या कैसे बोल सकते हो वो प्रिमिटिव है, दिस वर्ड प्रिमिटिव इन इटसेल्फ इज डेरिवेटिव. ओके, तो बाद में विल बी लाइक नेक्स्ट थ्योरी में विल सी दैट कल्चर रिलेटिविज्म विल कम एज एन आइडिया. तो वो बोला कि देखो हर किसी का जो कल्चर है, दैट इज अ वे टू एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. राइट, अब हम अपने एनवायरनमेंट की पर्टिकुलर तरीके से, हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमने ये तरीका अपनाया, कंपटीशन एग्जाम कराएंगे, उनके यहाँ पे कंपटीशन रिलेटिवली लेस है, वो देयर हैप्पी, दे डोंट वांट टू क्वालीफाई यूपीएससी एंड ऑल दैट स्टफ, नहीं करना मेरे को. वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, so they are adjusting to their environment, whatever way is suitable for them, we are adjusting to our environment, and that is why our idea of progress cannot be applied to their idea, or their idea of progress will not be applicable here in the same way. तो जब दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते तो फिर रैंक कैसे करो? ओके, so this idea of ranking, idea of comparing, it is prejudice. This is the first criticism. Clear है? अब लिख लो. Ranking of societies is tainted by prejudices. Ranking of society is tainted by prejudices. In bracket you can write ethnocentric. Ethnocentric. Second, as I told you, जब travelogues लिखे जाते थे initially, when navigation actually started during the phase of Renaissance, and जैसे कि कई सारे navigators they started traveling towards Africa, India and then America. At that point of time आप सोचो, I have told you कि ये काफी ज्यादा sensational लिखते थे.
एकदम मसाला लगा के मिर्च मसाला लगा के बता दें ताकि लोगों का अटेंशन ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो व्हाट वाज हिज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन? टाइलर की डिड ही एक्चुअली सॉ दीस सोसाइटीज? ही एक्चुअली डिपेंडेंट व्हाटएवर थ्योरी दैट ही गेव वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि जाके मेरे को देख लें कि किसी जगह पे घर बैठा था किताबें एसी रूम में बैठ के वैसे किताबें देख रहे थे, अब किसी ने लिखा कि वो लोग तो कैनिबलिस्टिक है और उनके तो सिर्फ सीन निकले हुए हैं, he believed it and he just wrote it. So basically इनका जो आइडिया है that is flawed because it is not at all based on first hand experiences. The data that he had was secondary data, ठीक है। So this kind of anthropology is called as armchair anthropology, ठीक है। कि घर पे बैठे हैं, सोसाइटी के साथ कोई कॉन्टैक्ट तो है नहीं, अब वो कहीं से किसी ने लिखा हुआ था उसको पढ़ लिया और उसके बेसिस पे अपनी थ्योरी बांट दी, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, ठीक है। You should have gone there, you should have seen it, maybe then you would have got authentic data, but the data that he had depended upon on the basis of which he gave his story was secondary and credibility of data cannot be verified कि वो data कितना credible था, कितना सही था, कितना गलत था, कुछ नहीं पता। ऐसा थोड़ी क्योंकि वो travelogues थे और travelogues definitely were written to attract the attention, ठीक है। हर कोई attention seeker था, आप भी यही चाहते हो, तो क्या हो जाएगा कि अभी the moment जैसे कई सारे टॉपर्स होते हैं यूपीएससी से निकल जाते हैं तो when they go and stand at the podium so they will be making their own stories, यार ऐसा हो गया क्योंकि वो फिर स्ट्रगल दिखनी चाहिए ना देर साल, ऑल्दो वैसे सब बढ़िया चल रहा था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रगल दिखनी चाहिए सो दैट कि उनके फैन फॉलोइंग बढ़े कि हाँ भाई साहब ये बड़ा टॉपर है, इसने इतनी मेहनत की है, इसके फलाने की डेथ हो गई, इसकी हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। इन द सेम ट्रैवलॉग्स भी जब घूम के आए हो बताओगे बताओगे तो लोग कैसे सुनेंगे, अगर ये बताओगे कि वो लोग तो हमारे जैसे ही हैं, बढ़िया चल रहा था उनका, हाँ अब नेचर के बारे में बताओगे तो फिर लोग पढ़ेंगे नहीं, या पहाड़ वहाड़ देख लिया बढ़िया था एकदम। तो दैट इज व्हाई ये ट्रैवलॉग्स वर सेंसेशनल एंड इनका डेटा वाज नॉट एट ऑल क्रेडिबल एंड दैट इज व्हाई ये जो इनका जो थ्योरी है दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा जो क्रेडिबल हो, ऑथेंटिक हो। तो आर्म्स एंड एंथ्रोपोलॉजी जस्ट लाइक it depended upon it depended upon secondary source of data like travelogues and missionary accounts, travelogues and missionary accounts which is not or which were not credible और उस credibility is under scrutiny, ठीक है। in bracket you can write armchair anthropology, ठीक। नेक्स्ट वन, जब बाद में इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग आए तो उन्होंने बोला कि यार आप बोल रहे हो कि जैसे जैसे कल्चर बढ़ा, सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हुई, so man there was a tendency towards happiness, power and goodness, but the recent violent things that have happened in the past like first world war, second world war, nuclear attacks on Hiroshima and Nagasaki, say this Ukraine का जो war चल रहा है, people dying, जो militancy हो रही है अफ्रीका में, बोको हराम, ISIS, तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये तो कहीं से पावर, हैप्पीनेस और गुडनेस तो नहीं दिखा रहा है in this and such kind of genocide massacre and not present in the past। सैवेजरी के केस में कौन से genocide massacre थे, ना लोग के पास इतना पावर था ना वो genocide कर पाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, अगर कोई जानवर मार जाएगा तो बीमारी मार जाएगी, that is it, ठीक है। इवन एकदम ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली स्टार्टेड टू हैपन द मोमेंट जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी और जब हमारे पास सरप्लस आने लगा। तो क्वेश्चन आया कि सरप्लस को कंट्रोल कौन करे, जब तक सरप्लस नहीं था और हर किसी के लिए काफी था, अब पूरा जंगल है, 10 लोग आस-पास हैं, 10 लोगों के लिए बहुत है उसमें खाने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि एक जगह पे सेटल हुए, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे। अब एग्रीकल्चर सेटल होके कर रहे हैं और अब जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर नहीं कर सकते। पहले तो किसी एनिमल को हंट किया, कोई रेफ्रिजरेटर तो था नहीं कि हंट कर लोगे और स्टोर कर लोगे, बाद में यूज़ करेंगे। आपको देन एंड देयर यू हैव टू कंज्यूम इट। तो सरप्लस का आइडिया ही नहीं था। बट नाउ सरप्लस आइडिया आ गया और जगह भी आपकी फिक्स हो गई, अब आप मूव नहीं कर सकते वहाँ से। द मोमेंट सरप्लस विल कम, देयर विल बी कंटेस्ट कि हू विल कंट्रोल दैट सरप्लस, देयर विल बी फाइट्स। So violent conflicts actually have increased as we have evolved, means as our culture has moved towards capitalism, isn't it? So how does this idea justify Tyler's idea of as we evolve, we move towards happiness, power, goodness? Everything this idea? Just like this. The violent events of past, the violent event of past century make it difficult to assume that, make it difficult to assume that modern educated nations, modern educated nations successfully promote humanity's goodness, successfully promote humanity's goodness, power and happiness, power and happiness. ठीक है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। यार मुझे लगा कि तभी लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए था कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड कैसे वैलिड है, कैसे हो सकता है? डू वी थिंक सिमिलरली इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस? नो। कहीं पे भी कुछ जगह पे ड्रॉट होता है तो क्या हर जगह सॉल्यूशन सिमिलर है? नो। कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, कोई और सॉल्यूशन देगा, ठीक है, कोई कैनाल बनाएगा, कुछ 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 भी करेंगे, बट दे विल बी कमिंग अप विद डिफरेंट सॉल्यूशन। इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल कम अप विद द सेम सॉल्यूशन, ठीक है। तो चीटिंग में ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ाई बना के लेके आता है। आप लोगों ने बस पढ़ाई कर लिया, कुछ हम तो डेस्क पे लिखते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव जो आप लोगों ने सुना होगा एक आईपीएस से तस्वीर करेंगे, वो ब्लूटूथ वाला हेडसेट लगा के लेके आते हैं। आज के टाइम पे वो आपने मना भी देखिए मोबाइल लेके आता है वो, राइट? So was everybody with coming up with the same solution for the same problem? No. There can be multiple ways of dealing with the same problem, multiple solutions of dealing with the same problem. Psychic unity of mankind is an invalid assumption here. So if you remember, जब हम लोगों ने theory शुरू की थी, I told you that theory has four elements. The first one is the question, that is the gap in the knowledge. Then to answer this question, we have assumptions. तो यहाँ पे assumption क्या था? Psychic unity of mankind. और उसके बेसिस पे उन्होंने पूरी theory लेकिन ये assumption ही flawed है, तो आगे की theory तो flawed हो ही जाएगी. Okay, ये जब the moment you say कि psychic unity of mankind flawed है, the moment you say this, so then the idea that every culture will have same trajectory of growth automatically discard हो जाएगा, right? So this psychic unity of mankind is a flawed assumption. Just like it. Psychic unity of mankind is a flawed assumption. It fails to take into account, it fails to take into account uniqueness of individuals, uniqueness of individuals, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल। ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ यूज किया एज फॉर एवोल्यूशन। इट इज फाइन एक्चुअली, कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल में इतना फ्लॉ नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल कुछ कंसेप्ट लाइक जैसे आई टोल्ड यू लाइक शेकिंग हैंड्स और ये सब, तो डेफिनेटली दीस आर प्रैक्टिसेस व्हिच आर फॉलोड ड्यू टू फोर्स ऑफ हैबिट, ठीक है, आदत बन गई है, तो उसका रेलेवेंस नहीं है। बट अज्यूमिंग एन एंटायर सोसाइटी एज सर्वाइवल, मतलब आप ये मान रहे हो कि मिलियंस ऑफ ईयर से ये लोग, हजारों साल से ये लोग में कोई चेंज नहीं आया, दे आर स्टैटिक। When I'm saying that these are primitive people and they reflect our past, I am assuming that these people who have been living in that jungle for say thousands of years, they have been same throughout. ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो एक फ्लॉड assumption हो गया, isn't it? तो आप कैसे प्रूव कर पाओगे कि हजारों साल से यहाँ पे रह रहे हैं और जैसे कि हजारों साल पहले थे वैसे ही आज हैं? Assuming an entire society reflecting or as complete as survival, ये तो बहुत ही गलत आइडिया था। ये तो this is not a valid assumption or a valid idea argument. Is it clear? Just like this. Concept of survival is okay. Concept of survival is okay or fine, but to assume that an entire human group has been static, representative
has been static representative of an earlier culture is wrong. Static representative of an earlier culture is wrong. ठीक है? So these are some of the major criticism about Tyler. Now conclusion लिखो आप कि Tyler के बारे में मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो how you should conclude. We'll discuss कि कैसे-कैसे इन पॉइंटर्स को यूज करना है when we'll be starting answer writing 2 lecture के बाद. Okay. So conclusion. Tyler shaped the development of anthropology. Tyler shaped the development of anthropology as a field of inquiry. As a field of inquiry. Of all of his contribution. Tyler's definition of culture is most enduring or most important. Tyler's definition of culture is most enduring or important. By outlining general principles of social life, and defining cultural dimension of human existence. Tyler, dimension of human existence. Tyler created anthropology. The study of humankind. Tyler created anthropology, the study of humankind. अब देखो ये बहुत ही फ्लावरी वर्ड्स हैं उसके लिए, बट इनमें से अगर आप एक दो ऐसे जैसे कि जब हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे तो फॉर आई गिव यू सम पहले से प्रिपेयर्ड कंक्लूजन. ओके, अब इनमें से कुछ ऐसे कंक्लूजन हैं जो आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे. आप यहाँ पे टाइटल की मॉडर्न डाल दो तो भी सही है. ठीक है, कुछ चीजें हटा के, और आप ऐसे कुछ फ्लावरी से कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर करते हो एग्जाम के लिए, और एग्जाम में आप इसको यूज कर लो तो आप पहले तो आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है. यू डोंट हैव टू फ्रेम द कंक्लूजन देयर. प्लस ये कंक्लूजन विल ऑलवेज बी बेटर देन द काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट यू विल बी फ्रेमिंग इन द एग्जाम व्हेन यू हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. लाइक आपके पास 7 मिनट्स होता है 10 मार्क के क्वेश्चन लिखने के लिए, अप्रॉक्सिमेटली 10 मिनट्स फॉर 15 मार्क एंड करस्पॉन्डिंगली 13 और 14 मिनट्स फॉर 20 मार्क. अब आपको 14 मिनट में 300 वर्ड के आसपास आंसर लिखना है. एवरेज आता है 20 से 22 वर्ड आपको पर मिनट लिखना है. अब उसमें आप वहीं पे स्ट्रक्चर बनाओगे, वहीं पे कंक्लूड करोगे, सब कुछ तो वो पॉसिबल नहीं है. एंड इफ यू ट्राई टू डू इट योर आंसर्स विल बी काइंड ऑफ वेरी एवरेज आंसर डिस्पाइट नोइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कंटेंट तो है ही है, प्लस स्ट्रक्चर शुड आल्सो बी घर से प्रिपेयर या होममेड आपके पास होना चाहिए, पहले से दिमाग में होना चाहिए. एंड दैट विल हेल्प यू सेव टाइम, विल हेल्प यू राइट अबव एवरेज आंसर्स देन रेस्ट ऑफ द पीपल. ये पूरा गेम एग्जाम जो है वो रिलेटिव है. ओके, इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्कोर 90% or 80% ओवरऑल. यू हैव टू स्कोर बेटर देन अदर्स, एंड दैट इज व्हाई योर आंसर शुड बी बेटर देन अदर्स. ओके, एंड दैट विल गेट यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स. फॉर दैट यू हैव टू कंटेंट के साथ-साथ आप लोगों को ये काम करना है कि आंसर राइटिंग पे बहुत काम करना होगा. और सी एंथ्रोपोलॉजी में जस्ट टू टेल यू वन बेसिक आइडिया, आउट ऑफ 500 मार्क्स का पेपर जो आप अटेम्प्ट करोगे, दो पेपर है 250 नंबर के 500 नंबर के पेपर अटेम्प्ट करोगे, 350 to 400 marks of the paper will be repeated from last 10 years question. I can guarantee you that. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा out of 500 that you will be attempting 100 to 120 30 marks of the paper will be some new question. But assume कि ये 350 नंबर ही आपके पास repeated आ गया है. And it's one of the reason that most of the people have chosen anthropology because paper repeat होता है. ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा कि बहुत डायनेमिक क्वेश्चन नहीं है, तो दिमाग में लगाना पड़ेगा. तो पेपर रिपीट होने का फायदा तब होगा जब आप रिपीटेड क्वेश्चन को घर पे ही प्रैक्टिस करके जाओ. So that वहां पे you will be having a well prepared answers for these questions. So that you just don't have to think that जैसे ही वो क्वेश्चन लिखा चाहिए इसका आंसर पहले लिखा होता है लिखो. अब वहां अगर आप इन सबको पहले से प्रिपेयर करके नहीं जा रहे, पहले से लिख के नहीं जा रहे हो, and you go in the exam and then you find ठीक है ये क्वेश्चन तो पता है लेकिन वहीं पे स्ट्रक्चर बना रहे हो, पहली बार उसका आंसर वहीं पे लिख रहे हो, so your answer will be very average or even below average. आपको इस चीज का कोई एडवांटेज मिल ही नहीं पाएगा. बट इफ यू हैव डन प्रीवियस क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, आप ये क्लास के साथ ही साथ कर रहे हो, आई कैन गारंटी यू कि एक बेसिक मिनिमम स्कोर है, उससे नीचे आ ही नहीं सकता. 270 to 80 इज द स्कोर, यू विल इजीली गेट. बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, बट 270 to 80 इज द बेसिक मिनिमम स्कोर. इफ यू डू व्हाटएवर आई टेल यू तो कंप्लीटली, तो आप आंसर में इससे नीचे स्कोर कभी नहीं करोगे. आई कैन गारंटी यू दैट. लेट मी टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट 2014 and 15. व्हाट हैपेंड कि आई नेवर प्रैक्टिस. ऑल आई थॉट वाज जैसे आप लोगों को लगता है कि पहले कंटेंट तो आना चाहिए तभी तो आंसर लिखेंगे. यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर जीएस एंड नोबडी वुड हैव लिफ्टेड हिज पेन और हिज पेन फॉर राइटिंग आंसर थिंकिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग. और जब चाहते नहीं तो लिखेंगे क्या. बट प्रॉब्लम ये होती है कि इस चक्कर में हम पोस्टपोन करते जाते हैं. वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग एंड ऐसा हो जाएगा कि हम मेंस में बैठे होंगे. वी कीप ऑन प्रिपेयरिंग द कंटेंट बट आंसर कभी आंसर लिखा नहीं. और जब आंसर नहीं लिखेंगे तो व्हाट विल हैपन कि जो एग्जाम में आंसर होंगे वो एवरेज बिलो एवरेज होते हैं, पेपर भी छूटता है अलग तरीके से. एंड दिस वाज द केस विद मी इन 2014 and 15. आई वाज नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 200 इन एंथ्रोपोलॉजी. वेरी बैड स्कोर. एंड ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं था एंथ्रोपोलॉजी. सीरियसली आई वाज वेरी गुड इन कंसेप्ट, आई अंडरस्टूड एंथ्रोपोलॉजी वेरी वेल. देन 200 से ऊपर स्कोर नहीं आता एंड दोनों पेपर में 80 60 नंबर के आसपास छूट जाता, 60 नंबर. एंड देन समबडी सजेस्टेड मी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो. So in 2016 I didn't add a single new word in my copy. मतलब जो भी मुझे पता था 2014 में जितना पढ़ा था बस वही मेरे नोटबुक में था. Not even a single word. But what I did was I practiced last 10 years paper of paper 1 and 2. सारे क्वेश्चन लिख डाले. ठीक है. And my score suddenly jumped to 320. सीधा जंप था. कहां 202 और कहां 324. And 2017 also I did means and then I got approximately 360 marks. And मैंने 2017 में भी यही किया, मैंने कुछ नहीं जॉइन किया, कोई टेस्ट नॉट even single new word in my content. वही 10 years पेपर वापस लिखा. And then again my score was about 300. So this is I'm telling you and this but ये चीज मतलब आप देखो कि इतनी नैरो साइटेड में आंसर में ही ये काम कर रहा था, but I didn't did it for ethics जिसमें मैं बार-बार मार खाता गया. And reason I'm not in the list is because of ethics. So this is also very subjective paper and यहाँ पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे. So let me give you this एक और, अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं हो तो let me give you एक कैलकुलेशन आल्सो कि सपोज करो कि 400 नंबर का पेपर रिपीटेड है. ओके, इट्स सो आई एम टेलिंग यू कि 10 में से 6 इज द एवरेज मार्क्स. वेरी एवरेज. आपने 10 क्वेश्चन के जो पूछा गया है, जो भी पूछा गया है एक्जेक्टली आप वही लिख के आ जाओ विद एवरेज स्ट्रक्चर, एवरेज सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर. देन आल्सो यू विल गेट 6 मार्क्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर लिखते हो तो 7 7.5 आप 10 में से एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई एम सेइंग दैट इवन इफ यू गेट एवरेज इन ऑल दिस 400 मार्क्स तो आप समझो कि आपको 240 यहीं पे मिल गए. एंड बाकी बचे 100 नंबर को बस आप अटेम्प्ट करके आ जाओ. ठीक है, 30 35 आएंगे, 30% मार्क्स आएंगे. तो आई एम टेलिंग यू कि 270 to 80 इज द बेसिक मिनिमम दैट यू विल बी गेटिंग फॉर श्योर. एंड आई एम सेइंग दैट ये 400 नंबर ऐसा है, इसमें से कुछ क्वेश्चन 200 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको एकदम अच्छे लग रहा है बहुत, और आपके आंसर भी एकदम सुपर मॉडल आंसर टाइप है. बढ़िया आंसर. You can even get 80%. So that is what will help you cross that 300 वाला बैरियर जिसके लिए आप लोग आंसर देंगे. तो वन थिंग, कंटेंट कितना भी हो, आई कैन टेल यू कि कंटेंट अब आप लोग को जितना पढ़ा है आप उसका 10-20% एग्जाम में लिखोगे. ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं लिख पाओगे. बट कंटेंट आना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, बट उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपको उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. 8 मिनट में कोई भी ऐसी चीज नहीं लिख पाओगे जो बाकी किसी को पता ना हो या बहुत नई चीज हो. बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट आप कभी लिख भी नहीं पाओगे. बट व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट इज आपको कम वर्ड्स में एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, आइडियाज में कोहेरेंस होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए. एंड दैट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स एंड दैट विल हेल्प यू रियलाइज योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस. ठीक है, वन ऑप्शन कैन मेक यू और ब्रेक. आई टेल यू वेरी श्योर. क्या बाकी जीएस में लाइक 1000 में से आपके 400 जैसे ही टापते हैं स्कोर तो यू फील लाइक मतलब इट्स वन ऑफ द टॉप स्कोर्स इन जीएस. 400 टू बी वेरी गुड स्कोर. 450 के अप्रॉक्सिमेटली तो टॉपर्स होते हैं. ठीक है, तो इट्स जस्ट 45%. एंड आंसर में 500 में से आप 300 320 315 इस तरीके से स्कोर करते हो, 60+%. ओके, तो जस्ट मेक श्योर दैट आंसर राइटिंग आप खूब सारी करो. मींस आई कैन नॉट होल्ड योर हैंड्स. शुरुआत में आई विल बी गाइडिंग यू जब आंसर राइटिंग हम शुरू करेंगे, बट ये आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है कि व्हाटएवर आई एम टीचिंग, वंस आई हैव गिवन यू सम टिप्स और टेम्पलेट्स फॉर आंसर राइटिंग, यू शुड कीप राइटिंग आंसर्स. इफ यू हैव एनी इश्यूज विद इट जस्ट अप्रोच. ठीक है, आपको कोई डाउट है आपसे बात करो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू. एंड जिन लोगों ने भी फॉर एग्जांपल गौरव है जो परीक्षित है, जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालीफाई किया है, वन थिंग दैट मेड देम डिस्टिंक्ट इन द क्लास वाज कि वो पूरे टाइम आंसर राइटिंग करते थे. मींस फोकस वाज नॉट टू रेक्टिफाई एंड देन
मतलब कंटेंट में बहुत एक्सेल करना, बट जो भी पढ़ के जाना है बस उसको देखना है कि पुराने क्वेश्चन को या पहली बार मैंने कंटेंट काफी है उसको आंसर करने के लिए, और फिर उस कंटेंट को कैसे यूज करना है आंसर को लिखने के लिए। वंस यू हैव डन इट, एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस हो जाता है। शुरुआत में आपने 5 क्वेश्चन देखे, आपको पहले से पता है कि ये मैंने लिखा हुआ है, ये मेरे को पता है, यू विल बी राइटिंग 5 क्वेश्चन फ्लो में हो गए, तो उसके बाद फ्लो में आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा, इट विल बी वेरी गुड। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास कितना मर्जी पढ़ लो, किताब रीड कर लो, एग्जाम में पेन चलाना है और घर पे पेन नहीं चलाओगे तो वहां पे पेन नहीं चलेगा। जितना पेन चलेगा यहाँ पे इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, so this is my humble appeal. आप लोग अभी तो हम लोगों ने शुरू किया, इट्स द थर्ड लेक्चर, बट थ्रू आउट दिस 120 lectures whatever we will be covering in entire anthropology, I'll be telling you, giving you this message multiple times कि आंसर लिखना शुरू कर दो, and don't wait. और ये मत सोचना कि मेरे आंसर खराब है, पहले दिन से कोई भी प्रो नहीं होता। Okay, you will be writing answers gradually, you will be improvising it, and maybe after 120 lecture, or maybe after 2-3 months after lecture, your answers will be above average. बट पहली बार जब भी आंसर लिखोगे आपका आंसर बिलो एवरेज ही होगा, बहुत ही बेकार होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि वो जो पहली बार जो बिलो एवरेज आंसर लिखना है वो यहाँ पे लिखोगे या अपने मेंस में लिखोगे। ओके, दैट्स योर कॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइटल। लेट्स स्टार्ट विद, एंड इट इज नॉट अबाउट टू डिमोरलाइज आप लोगों को वो करने कराने के लिए नहीं था, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए एग्जाम आंसर लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। आप एग्जाम में मतलब आप एक दिन के बाद ये रियलाइज करोगे हो सकता है, जो भी पहले दिन में मेंस लिखेगा, लेकिन मेंस के बाद आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आपको आंसर लिखना घर पे कितना ज्यादा जरूरी है। बी जीएस, बी एंथ्रो, बी एसे, व्हाटएवर इट इज, जितना पेन घर पे चलेगा उतना ही मेंस एग्जाम में चलेगा। नेक्स्ट स्कॉलर इज एलेक्स मॉर्गन, लुई हेनरी मॉर्गन। सिंस लास्ट 2 इयर्स द पेपर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस इयर्स। इस बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग लास्ट 2 इयर्स का पेपर देखोगे तो इट्स लाइक, पहली बात तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी क्लास में बैठे हैं या ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, दे आर वेरी न्यू टू एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग इज बेस्ड ऑन ये तो पब्लिक ओपिनियंस है। टेलीग्राम चैनल पे वो लोग यार इस बात पे बहुत डिफरेंट है, और पीपल आर सेइंग दैट ट्रेंड इज चेंजिंग एंड ऑल दैट स्टफ, एंड यू टेक इट वेरी सीरियसली। पर वो लोग वहां टेलीग्राम पे बैठ के कौन सा कुछ खा चुके हैं जिंदगी में, उनसे पूछो कि कितनी बार मीम्स दिया है, और उनके ओपिनियन को आप सीरियसली मत लो। ठीक है, ये जो चाय की टपरी वाले डिस्कशन होते हैं या इन सिमिलर वे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन होते हैं, इन डिस्कशन का कोई वैलिडिटी नहीं है। एनोनिमस कैरेक्टर्स एनोनिमसली दे आर ट्राइंग टू डिसीव यू, दे विल बी ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, एंड आप कोई भी साल का पेपर उठा के देखो, आई कैन गारंटी यू इवन लास्ट ईयर्स पेपर और जो सबसे टफेस्ट पेपर होगा आप उसको उठा के देखो, 70 to 80% क्वेश्चंस आर स्टिल द सेम, एंड वो जो ट्रेंड चेंज हुआ है जिसको वो बोल रहे हैं, इट्स ओनली द 20% क्वेश्चंस दैट आर डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स, दैट आई ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड। अभी अपना फोकस क्या होना चाहिए कि वो 80% क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, नॉट दैट 20% जो पता नहीं कहां से आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं, वो तो हर साल होगा, बट एटलीस्ट व्हाट वी कैन एंश्योर इज टू मेक श्योर कि 80% रिपीट होने वाले हैं वो ढंग से कर लें, एटलीस्ट 40 to 50 तो उसमें तो स्कोर कर लें। ये जो नहीं है उसका जिसका कोई भरोसा नहीं है लेकिन हमारा फोकस हमेशा उस 20% पे होता है जिसका कोई माई बाप नहीं है, वो किस डायरेक्शन में आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, बट हम उस 20% को प्रेडिक्ट करने के रेस में लगे हुए हैं कि वो कहां से आएगा, वो किसने सही कर दिया, वो किसने पढ़ा दिया, किस टीचर के सीरीज में से आया। अरे यार वो 20% इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एंड इट इज नॉट द वन दैट विल डिसाइड योर सिलेक्शन। द सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बिकॉज़ वो सबके लिए नया क्वेश्चन है, एंड देन अगर वो सबके लिए नया क्वेश्चन है तो सबको इसमें बहुत एवरेज आंसर लिखा गया, बिलो एवरेज लिखेगा, बट योर सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी रिपीटेड, एंड उसमें कौन अच्छा आंसर लिखेगा, उसमें डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, एंड दिस व्हाट इज हैपनिंग इन फिल्म आल्सो, कि फिल्म में मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन आ गया और वो एनसीईआरटी में से नहीं आया। अब किसी भाई ने ये रिमूव कर दी कि तमिलनाडु बोर्ड के उसमें से आया है, एनसीईआरटी में से आया। अब लोगों ने तुरंत एनसीईआरटी दिला दो और अब तमिलनाडु बोर्ड पढ़ेंगे। फिर किसी ने बताया कि फलाने किसी ऑथर ने कभी लिखी थी वो किताब, उसमें से क्वेश्चन है, तो सारी किताबें और ज्यादा उसको ही पढ़ेंगे। अरे भाई एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा शिफ्ट कर दो, बट द सेम इज द केस विद प्रीलिम्स, एनी ईयर यू टेक अप प्रीलिम्स का पेपर, जितना भी टफ सबसे टफ ईयर भी होगा ना, आप उसका पेपर अभी उठा के देखो, तो आफ्टर गोइंग थ्रू योर जीएस सिलेबस आई कैन गारंटी यू दैट आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस डायरेक्टली आर फ्रॉम द जेन्युइन सोर्सेस दैट यू आर सपोज्ड टू रीड, लक्ष्मीकांत जी, सीरियन, एनसीईआरटीज एंड बेसिक करंट अफेयर्स जो आप लोगों को पढ़ना होता है, 60 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम दोस एरिया, गारंटी है मेरी, किसी भी साल उठा के देखो, एकदम प्लेटर पे रख के वो क्वेश्चन दिए जाते हैं कि लो सॉल्व करो। पर प्रॉब्लम पता क्या है, फोकस हमारा किस पे होता है, इस पे, कि ये 40 कहां से आ गए। अब वो मार्क्स के कोई न्यूज़पेपर से पढ़ के लिख लेगा या कुछ भी पूछ लेगा, अपने को क्या करना है, फोकस इस पे करो ना, ये सिलेक्शन मिलेगा, ये तो किसी का नहीं सही होने वाला है, दो चार सही हो गए तो क्या फर्क पड़ गया। एंड आप अगर देखो लास्ट 3 इयर्स से प्रीलिम्स कट ऑफ इज नॉट मोर देन 100, 190 टू 100 के बीच में, 100 काफी नहीं है, और मैं आपको बोलूंगा कि 60% तो आपके आने ही आने जेन्युइन सोर्सेस से, तो आप लेकिन इसमें परेशान हो। अब यूपीएससी इज आल्सो प्लेइंग गेम्स विद योर माइंड, राइट, कैसे कि वो ये जो 40 क्वेश्चन है ना वो एक साथ नहीं होते, वो 2-3 क्वेश्चन के एक इतने स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड होते हैं, आपने शुरुआत के 5 क्वेश्चन के डायरेक्टली आगे चले जाके वो तो मेरे को आता ही नहीं, और इतने ज्यादा डीप क्वेश्चन मेरे एकदम अटेम्प्ट मुझे लगा कि अब तो गया, ये अटेम्प्ट खराब हो गया, डूम्ड। लेकिन फिर भी आपने थोड़ी हिम्मत रखी, चलो पीछे से करते हैं, यूपीएससी नोस दिस, एंड तो पीछे के 5 क्वेश्चन से डाल दिए कि यार फिर तो आप सही से कर सकते हो, वहां पे खत्म हो जाएगी, लो। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि 10 क्वेश्चन हुए यार, आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट दिस 60 क्वेश्चन। हो सकता है कि आपकी किस्मत कहीं खराब हो, आपने बीच में करना शुरू किया, उसमें भी 5 क्वेश्चन आपने वो भी नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी भी आपके पास ये 60 ही आपको चाहिए, दिस 60 क्वेश्चन ओनली, तो ऑलवेज लुक फॉर दीस 60 क्वेश्चन एंड मेक श्योर दैट दीस आर करेक्ट, और वो आपके जेन्युइन सोर्सेस से ही आएंगे, आई कैन गारंटी यू दैट। ये हम लोग को ये बोला जाता है ना कि ये जो थर्ड स्टेज है ये पर्सनालिटी टेस्ट है, आई एम टेलिंग यू यूपीएससी इज टेकिंग योर पर्सनालिटी इन ऑल द 3 स्टेजेस, अलग-अलग तरीकों से। प्रीलिम्स में भी दे आर जस्ट टेस्टिंग योर पर्सनालिटी कि हाउ डू यू हैंडल अनसर्टेनिटी, सिलेबस कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये चीज आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी होने वाली है ना, कोई नया इंसिडेंट हो गया, कोई नई जैसे जो अनप्रेसिडेंटेड है, जैसे कोई पास्ट में कोई एग्जांपल है, बट यू विल बी आस्क्ड टू हैंडल इट। तो हर चीज का अगर मान लो हर चीज का कोई प्रेसिडेंट हो, हर चीज का कोई एक वे ऑफ सॉल्विंग हो, तो फिर आप लोगों की जरूरत है, टैलेंटेड लोग को वहां जाने की जरूरत है, व्हाई दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन योर ट्रेनिंग, गिविंग यू सो मच ऑफ लग्जरीज, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू शुड बी एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स। इसका पास में अगर पास में हर चीज का सॉल्यूशन है तो रोबोट बिठा दो वहां पे, तो पता है कि यही तो काम करना है, बात खत्म। पीडीएम एसपी की जरूरत क्या है, isn't it? So they are checking कि प्रीलिम्स में when you know do not know things, most of the things that you are seeing वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ एकदम बत्ती नहीं जल रही दिमाग की, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आर यू एबल टू होल्ड योर काम कंपोजर, आर यू एबल टू ट्रेड दैट पाथ। अगर हां डेफिनेटली क्वालिफाई प्रीलिम्स, आपको पूरे टाइम प्रीलिम्स में वही चेक किया जा रहा है, अगर आपने अपने दिमाग का संतुलन मेंटेन करके रखा, काम रखा वहां, तो these 6 you just have to identify these 60 क्वेश्चंस, आप क्वालिफाई कर जाओगे फॉर श्योर। बट अगर आपके दिमाग में ये 60 क्वेश्चन की जगह ये 40 क्वेश्चन आ गए, तो यू विल फील लाइक कि अब तो गए, एंड आप किसी भी साल का पेपर उठा के, आई कैन गारंटी यू 60 क्वेश्चन हैं ऐसे जो जेन्युइन सोर्सेस से आए हैं किसी भी साल, एंड these 60 क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट टू लेट यू क्वालिफाई। ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि जो अपना सॉलिड पार्ट है जिसको हम लोग क्लियर कट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रैंडम 400 नंबर का पेपर मुझे पता है कि लीक हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, जो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब उसको ना करके मैं दिमाग लगा रहा हूं कि वो जो 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आएंगे और कैसे उसमें एक्सेल कर सकते हैं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, तो फोकस ऑन एरियाज व्हिच आर ऑलरेडी नोन टू यू, एंड दैट इज फॉर श्योर। एंड ये सब जो र्यूमर्स हैं कि लास्ट ईयर से कुछ पेपर चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, हां पेपर उनके लिए चेंज हो रहा है जो बेसिकली भाषण पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक किताब है भाषण, कई लोगों ने इनिशियली इसी टॉपिक ने बोला कि भाषण से मैंने पढ़ी थी, अब टॉपिक ने ये बोला कि भाषण को भी यूज किया था, और लोगों ने इसमें भाषण को ही यूज किया था, और वहां पे लोगों ने सोचा कि एंथ्रो में से किताब नहीं है, भाषण पढ़ लो और हो जाएगा, एंड पीपल स्टार्टेड रीडिंग ओनली दैट बुक और क्वेश्चन बैंक है, एंड दे टुक एंथ्रोपोलॉजी ऑफ यूपीएससी का मेन एज लाइक वो जो 12th के जो पेपर होते हैं स्टेट बोर्ड्स के या ग्रेजुएशन में कुंजी आती है, हां क्वेश्चन आंसर्स, और वो पढ़ के पेपर दे दी, हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करने को पूछा गया तो पीपल विल लाइक कि पता नहीं, क्योंकि दिमाग में तो इंफॉर्मेशन जो है वो कंपार्टमेंट के फॉर्म में है, ये क्वेश्चन लिखा है तो बॉक्स खोलेंगे और वही लिख देंगे, अब थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करके पूछा गया तो विल बी गॉन, एंड दैट इज व्हाई फंडामेंटल्स भी क्लियर होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत सॉलिड होनी चाहिए। इफ यू आर राइटिंग 500 आंसर्स बिफोर मेंस फॉर एंथ्रोपोलॉजी, 500 आंसर आप लिख के जाते हो, मेरी गारंटी आप लिख के ले लो
कि आपके 270 से नंबर कम नहीं आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। और उसके बाद भी अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको पेपर दिखानी पड़ेगी, ठीक है? फिर आपने मतलब अपने करना सब कर लिया है। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस और जीएस में भी आपको ये करना है कि हर जीएस पेपर का कम से कम 200 आंसर्स आपको लिख के जाना है मेंस। एंड इफ यू आर एबल टू डू इट बिफोर सितंबर 2023 इन व्हिच व्हेन यू आर सपोज्ड टू अपीयर फॉर मेंस, आप पहले अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू में अपीयर करो। आई कैन गारंटी यू जितना पेन चलाओ, ठीक है? लेकिन ये चीज़ अभी से शुरू होनी चाहिए, डोंट वेट। एंड बेस्ट पार्ट है व्हाट आई यूज्ड टू डू, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मेंस में जब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे आंसर्स नहीं आ रहे, मैं कंटेंट भूल जा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस, मैं कॉपी खोल के आंसर लिखता हूँ। मुद्दा ये है कि आंसर लिखना है, ये नहीं कि मुझे याद करके लिखना है। आप आंसर लिखो, आप कंटेंट खोल के बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखो, आंसर लिखो। ठीक है, डोंट वेट कि पहले याद तो कर लूँ, क्योंकि आपके पास देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस नॉट टू राइट आंसर, बट ओनली वन टू कीप ऑन राइटिंग इट। यूपीएससी में तो मेंस में तो यही काम आएगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि कोई भी ऐसा एक्सक्यूज शुड नॉट ओवरपावर यू दैट कैन पोस्टपोन योर आंसर राइटिंग। आंसर लिखना आप शुरू करो, ओके? एंड सो मे बी वी विल बी स्टार्टिंग आंसर राइटिंग इन 1 और 2 डेज, ओके? तो आई होप बहुत ज्ञान हो गया। लेट्स कम बैक टू एलिस मॉर्गन। तो लुई हेनरी मॉर्गन, ये टाइलर बेसिकली ही वाज ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजी का एक बिगिनिंग था, एक रूट था ब्रिटेन में, एंड द सेकंड वन एक्चुअली वाज इन अमेरिका। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन अमेरिका एक्चुअली दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, मॉडर्निटी के दो सेंटर्स बने, एक यूरोप और एक अमेरिका, यहाँ पे भी एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली स्टार्टेड टू इमर्ज। एंड यहाँ पे द फाउंडिंग फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन अमेरिका वाज लुई मॉर्गन, हेनरी एलिस मॉर्गन, एंड सेकंड वन फ्रांस बुआ। ठीक है, ही वाज एक्चुअली ओरिजिनली अ ज्यू, जर्मन ज्यू था, वो बाद में अमेरिका आ गया, वहाँ पे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एस्टैब्लिश किया। अच्छा, टाइलर के बारे में मैं आपको एक बात बताना भूल गया। ही वाज एक्चुअली नॉट अलाउड टू मतलब उनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में नहीं हुआ था। बट interestingly, he was made the first professor of anthropology in Oxford University. He was the one who officially established anthropology as a discipline in Britain. But जिस यूनिवर्सिटी में उस रिलीजन की वजह से एडमिशन नहीं मिला उसको, he became the professor of that particular discipline in that university. वहाँ पे बाद में और इनफैक्ट टाइलर का इतना ज़्यादा नाम था कि आपने मैक्स म्यूलर का नाम सुना है? तो मैक्स म्यूलर यूज्ड टू कॉल एंथ्रोपोलॉजी एज़ टाइलर साइंस। ठीक है? ये एंथ्रोपोलॉजी का जो इन जनरल इतना रिलेशन माना जाता है एंथ्रोपोलॉजी को, कि वो बोला गया कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ टाइलर साइंस। ओके? नाउ लुई हेनरी मॉर्गन, so he was born in 1818 and he was a lawyer. कहानी है, आपको कभी एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, but you should know. So he was a lawyer by profession, also by education. But around 1840s में there was an economic depression that was witnessed in US. And due to economic depression, he was not able to get much of the legal cases, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा थी नहीं। So what he used to do was कुछ जैसे कि नोट्स आर्टिकल्स वगैरह ये सब लिखते थे। एंड ये वहाँ के उस समय के जो लॉयर्स थे, उनका एक पर्टिकुलर शौक था दैट दे यूज्ड टू जॉइन सम काइंड ऑफ सोशल क्लब। अब वो सोशल क्लब में जाके ना वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स होती थी, उन सबको लिखते थे, उनको पब्लिश करते थे, उसमें उनको कुछ पैसे मिलते थे। तो द फर्स्ट सोशल क्लब दैट ही जॉइंड वाज द ऑर्डर ऑफ जॉर्डियन नॉट। ठीक है? इन दिस सोशल क्लब कई सारे लॉयर्स वगैरह बैठे होते थे एंड वहाँ पे दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द ग्रीको रोमन मिथ्स। ठीक है? एंड ग्रीको रोमन मिथ्स और स्टोरीज वगैरह ये डिस्कस करते थे एंड देन दे यूज्ड टू कंपेयर दीस काइंड ऑफ स्टोरीज विद द नेटिव इंडियंस, और जो ट्राइबल अमेरिकन ट्राइबल्स थे उनको नेटिव इंडियंस कहा जाता था। आई हैव टोल्ड यू व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ही सेड आई फाउंड इंडिया, दैट्स व्हाई द ओरिजिनल हैबिटेट्स ऑफ दैट प्लेस वर कॉल्ड एज़ नेटिव इंडियंस। सो दे यूज्ड टू कंपेयर इट विद द स्टोरीज द मिथ्स ऑफ नेटिव इंडियंस। ठीक है, काफी कुछ सिमिलरिटी है उसमें। बाद में दिस होल सोशल क्लब चेंज्ड इट्स नेम एंड इट वाज नेम्ड एज़ द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ इरोक्वोई। तो क्योंकि बाद में इस पूरे सोशल क्लब का जो फोकस था दैट वाज नॉट नो मोर ओवर ग्रीको रोमन मिथ्स बट कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड द मिथ्स ऑफ नेटिव इंडियंस। एंड नेटिव इंडियंस एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ अमेरिका में रहते हैं, नॉर्थन साइड में, जिसको कहते हैं इरोक्वोई। ठीक है? एंड इस इरोक्वोई एरिया में 5 मेजर नेटिव इंडियंस रहते हैं हु बेसिकली हैव फॉर्म्ड ए कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी का मतलब ये 5 टेरिटोरियल एरियाज हैं जहां पे 5 ट्राइब्स रह रहे हैं एंड दे हैव डिसाइडेड कि अब हम लोग बाहर वालों के लिए एक नाम हो जाएंगे, दैट इज इरोक्वोई। तो व्हेन गवर्नमेंट में बेसिकली हम डील करना होगा ट्राइबल पॉलिसीज को लेके, ट्राइबल राइट्स को लेके, तो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग अस एज अ कॉन्फेडरेसी एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्फेडरेसी वाज नोन एज इरोक्वोई। तो वो इरोक्वोई में रहने वाले ट्राइब्स की ना मिथ्स और स्टोरीज वगैरह को स्टडी करने लगे। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ इरोक्वोई वाज द रीनेम, मींस दिस सोशल क्लब वाज रीनेम्ड एज दिस। ठीक है? अब यहाँ पे व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज सम नेटिव इंडियंस और सम पीपल हु हैव विजिटेड दैट एरिया, दे विल कम, दे विल नरेट देयर एक्सपीरियंसेस एंड हियर ही बेसिकली मेट a friend, एली पार्कर। अब एली पार्कर कौन थे? एली पार्कर वाज अ लॉयर हिमसेल्फ, बट ये एक पर्टिकुलर ट्राइब को बिलॉन्ग करते थे हु वाज लिविंग इन दिस इरोक्वोई रीजन, दैट इज सेनेका इंडिया। ठीक है? अब एली पार्कर को बोले भाई ये क्लब है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ इरोक्वोई, जहां पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ नेटिव इंडियंस इरोक्वोई एरिया के। अब इरोक्वोई को अभी कुछ बता दो। तो एली पार्कर एग्रीड, चलो मैं आपको बताऊंगा। व्हेन एली पार्कर केम ऑन द पोडियम देयर, so instead of talking about this myth stories and all that masala, he basically talked about how Iroquois or the tribe living in the Iroquois regions, they are being exploited by the foreign traders and how their condition is very much miserable. ठीक है? अब उन्होंने बताया कि बहुत अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि यार हालत बहुत खराब है वहाँ पे और वी शुड डू समथिंग। एट द सेम टाइम मॉर्गन बेरोजगार, इकोनॉमिक डिप्रेशन, आई टोल्ड यू, ज़्यादा काम तो था नहीं उनके पास। उसने बोला कि चलो केस मिल गए, मैं करूंगा इन लोगों का उद्धार और मैं इनको बचाऊंगा प्रॉब्लम से। तो ही सेज कि आई विल बी एक्चुअली डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस इरोक्वोई, कि मैं अब इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इरोक्वोई ही शुड विजिट दिस एरिया, interact with them, know about their culture, so that he can present a all inclusive study in front of the government या फिर उनके behalf पे negotiate कर सके। And this was actually entry of Morgan into both anthropology and politics. तो ये politically बहुत active रहे बात, ठीक है? और इनके tribal rights और इन सब के बारे में काफी ज़्यादा vocal भी रहे। But this was entry of Morgan in anthropology, wherein he visited Iroquois, and this person, Ellie Parker, he became his translator because इनकी language, इनको Iroquois की language तो आती नहीं थी, so whatever he wanted to ask, he became the medium of translation, medium of communication. ये बताते थे, translator को बताएगा, वो उसके जवाब को भी translate करते। So he visited that Iroquois area. So he entered into Iroquois area and he collected some data which he compiled in a book. The name of the book is League of Iroquois. ठीक है? In which he talked about their history, their architecture, their family, their marriage, their language, their material culture, tools, technology, whatever they use. And मतलब मेनली इनके कल्चरल जो भी एलिमेंट्स थे, उनके कल्चरल वे ऑफ लाइफ है, इसके बारे में इन्होंने कंपाइल किया और फिर देखा कि कैसे ड्यू टू कॉन्टैक्ट बाय फॉरेन ट्रेडर्स इट इज गेटिंग इंपैक्टेड। ठीक है? सो हियर इन दिस केस व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट फॉर अस, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज किनशिप टर्मिनोलॉजी। जस्ट लिसन अभी, किनशिप टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया और उन्होंने देखा किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदार। ठीक है? नात रिश्तेदार जो होते हैं उसको किनशिप कहा जाता है और किन्स टर्मिनोलॉजी इज हाउ वी कॉल देम। ठीक है? हाउ वी एड्रेस अवर रिलेटिव्स, दैट इज किनशिप टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जांपल वी कॉल अवर मदर माँ या मम्मी या जो भी, और पापा और चाचा चाची, ताया जी, ताऊ जी एंड ऑल दैट, दिस इज व्हाट इज द टर्म दैट वी यूज टू रेफर टू अवर रिलेटिव्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज किनशिप टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ दो टाइप के किन्स होते हैं, एक होते हैं लीनियल किन्स, एक होते हैं लेटरल किन्स। अब लीनियर किन्स कौन है? बेसिकली हम लोग डिटेल में देखेंगे किनशिप में, यूनिट 2.5, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट मॉर्गन डिस्कवर्ड। लीनियर किन्स आर दोस जो डायरेक्टली लाइन ऑफ डिसेंट में आते हैं। अब लाइन ऑफ डिसेंट क्या है? फॉर एग्जांपल फादर, अब उनके 2 बच्चे हैं, फिर उन 2 बच्चों के अलग 2 बच्चे हैं, तो दे विल बी द लीनियर किन्स। बट व्हेन आई एम सेइंग कि विद रिस्पेक्ट टू मी, इफ आई एम लुकिंग एट लीनियर किन्स, तो मेरे लीनियर किन्स कौन हो गए? फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, लीनियर किन्स हो गए। बट मेरे लेटरल किन्स कौन से होंगे? लेटरल का मतलब होता है साइड वर्ड्स। ओके? तो लेटरल किन्स विल बी चाचा, चाची,
mama. Okay, and it's literally if we are moving sidewards, that will be the lateral fins. And linear में just generation after generation we'll be talking about. हाँ, sorry, पिंडास, सपिंड, हाँ वो बात की बात करें जब हम इंडियन टर्म्स यूज करेंगे सपिंड और कॉल होते हैं, वो थोड़ा सपिंड एंड ऑल दैट स्टफ. बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि लिनियर और लेटरल में क्या डिफरेंस है? एनी डाउट? ठीक है, विल बी रीडिंग इट इन मोर डिटेल जब 2.5 यूनिट पढ़ेंगे. बट फिलहाल के लिए बस इतना टर्म आप समझ लो क्या होता है. लिनियर मींस डायरेक्ट डिसेंडेंट्स. ओके, तो फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, सो ऑन सो फोर्थ, दैट इज द लिनियर वन. लेटरल में बेसिकली साइडवर्ड्स जो आप देखो दूर दराज के रिश्तेदार में मामा की बहन की या मेरी मौसी के चाचा एंड ऑल दैट स्टफ, इस टाइप के जो लेटरल किन्स होते हैं. नहीं वो तो सेम लिनियर सिस्टर ब्रदर लिनियर हो गए क्योंकि हम लोग तो सेम डिसेंडेंट को बिलोंग करते हैं. बट कजिन्स वो लेटरल हो जाएंगे. ठीक है, सो नाउ what he saw was in this Seneca Indian sorry Iroquois में that they have same name or same term for lineal as well as lateral kins. That means कि वो अपने फादर और अपने चाचा और इधर अपने मामा उनको सेम नाम से बुला रहे थे और अपने माँ अपनी मासी वो भी सेम नाम से बुलाते थे. ओके, फादर एंड ऑल्सो फादर ब्रदर वाज कॉल्ड पापा एंड मदर सिस्टर वाज आल्सो कॉल्ड मदर माँ. अब दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर हिम बिकॉज ये तो हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता. हमारे लिए तो अलग नाम है, लिनियल के अलग है, लेटरल के अलग है. ठीक है, वी नेवर कॉल्ड एनी ऑफ द लेटरल किन एज आवर मदर और फादर. Isn't it? Are you agreeing with this or not? So the first thing that he studied here was, or which he found very unique, was kinship terminology, in which lineal and lateral kins they have same names. Okay. Now he also found that political organization in this society it's an extension of kinship. Political organization that means जो politics है वहाँ वो रिश्तेदारों में ही डिवाइडेड है. Okay, it's an extension of kinship. कि ठीक है कोई आदमी राजा है या चीफ है तो उसका भाई हो सकता है आर्मी को कंट्रोल करता हो, उसके जो ब्रदर इन लॉज हैं वो बेसिकली कोई पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करते हो, so on so forth. Okay, that is एक पर्टिकुलर फैमिली ही है जो पावर में है और उसी के कुछ रिलेटिव्स they have divided their specific role. So this is what he says that political organization it's an extension of kinship. Okay. So this is the two things that he basically observed here. Lineal and lateral kins called by same name and political organization being the extension of kinship. स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ती है कुछ साल बाद. ठीक है, एक ब्रेक आया कुछ साल बाद जैसे मूवीज में होता है. तो ही विजिटेड सम अदर एरिया मींस नॉर्थ की जगह वेस्ट साइड में जो ट्राइब्स रहते हैं अमेरिका के वहाँ पे ही मेट सर्टेन ट्राइब्स जिब्वा और भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज को देखा. तो उन्होंने देखा कि इनकी जो किंशिप टर्मिनोलॉजी है वो जो इरोक्वाई की टर्मिनोलॉजी है उससे काफी सिमिलर है, वो भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं. एंड उसके उनके दिमाग में लगा कि यार इतनी सिमिलरिटी कैसे हो सकती है, व्हाट मेड देम सिमिलर. तो ही देन विजिटेड एक स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट है उनके पास गए अपना ऑफर लेके आई वांट टू स्टडी द किंशिप टर्मिनोलॉजी अक्रॉस वर्ल्ड वाइड. तो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने फंड किया. उन्होंने एक क्वेश्चनर बनाया, क्वेश्चनर मींस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिंटेड क्वेश्चनर्स एंड ही गिव इट टू मिशनरीज एम्बेसीज ट्रैवलर्स ऑफ मींस यूरोप एशिया और ओशिनिया रीजन में ये क्वेश्चनर भेजा गया और बोला गया कि जिन जिन कम्युनिटीज को आप जानते हो उनकी किंशिप टर्मिनोलॉजी को रिकॉर्ड करके वो मतलब क्वेश्चन थे उसके आंसर लिख के भेजो. एंड नॉट ऑल द पीपल टुक इट वेरी एंथुसियास्टिकली कि यार ठीक है ये क्या बनना है. तो बट 139 रिस्पॉन्सेस गॉट बैक टू हिम. बट दैट इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डेटा राइट. तो जब वो डेटा उनके पास आया तो ही फाउंड दैट कि काफी जगह वर्ल्ड में सिमिलर टाइप ऑफ किंशिप टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लेटरल और लिनियर किन्स को एक जैसे नाम से बुलाया जाता है. एंड बेस्ड ऑन हिज डेटा ही क्लासिफाइड द किंशिप टर्मिनोलॉजी इनटू टू टाइप्स. जो वर्ल्ड की किंशिप टर्मिनोलॉजी है इनको क्लासिफाई किया गया इनटू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज classificatory and the second one is descriptive. So classificatory is the one that is wherein lineal and lateral kins they were called by the same name. तो बाप और चाचा को एक ही नाम से, माँ और मासी को सेम नाम से. So that is what is called as classificatory. Lineal and lateral called by same name or they are clubbed together. And descriptive में it will not happen. Lineal and lateral will be called by different names. तो इनके बेसिस पे उन्होंने दो टाइप की टर्मिनोलॉजी. Now comes the idea कि when he saw कि classificatory terminology, तो classificatory terminology में भी तीन मेजर इन्होंने ग्रुप बनाए. That is you can remember it in the form of GMT. ठीक है. One is Malayan, Turanian and Ganwanian. दिस मलयन कौन है? मलयन बेसिकली आर माउरीज का नाम आपने सुना है? माउरी जो न्यूजीलैंड के ट्राइब है. आपने रॉक का नाम सुना होगा, जॉनसन दैट फास्ट एंड फ्यूरियस वाला और रोमन रेंस दैट रेसलर गानवानियन. ठीक है, तो दे आर माउरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो दिस इज वेरी फेमस इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ न्यूजीलैंड. तो दे आर मलयंस माउरीज. देन टुरानियंस दे आर चाइनीज जापानीज एंड गानवानियंस नेटिव नॉर्थ अमेरिकन. ठीक है, ये तीन क्लासिफिकेटेड किंशिप टर्मिनोलॉजी में बिलोंग करते हैं. देन देयर इज डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी. यहाँ पे बेसिकली तीन ग्रुप से सेमिटिक यूएसए से आप याद कर सकते हो. सेमिटिक आर्यंस एंड यूरालियंस. सेमिटिक आर्यंस एंड यूरालियंस. तो सेमिटिक्स बेसिकली अरब्स हिब्रूज इनको सेमिटिक्स कहा जाता है. मेनली जो ज्यूज हैं, सो आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा एंटीसेमिटिज्म. दैट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द ज्यूज, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट. ठीक है, सेमिटिक्स अरब्स और हिब्रूज. देन आर्यंस दे आर द पीपल लाइक जो पर्शियन संस्कृत स्पीकिंग पीपल जो इंडिया वाला रीजन है और जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है. दैट इज आर्यंस एंड यूरालियंस इज ही केप्ट हिज ओन कंट्री देयर यूएसए वाले. ठीक है, मॉडर्न या फिर यूरोपियंस. ही सेज ये जो क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी है जिन सोसाइटीज में लाइक मलयंस, टुरानियन, गानवानियंस, दे बेसिकली आर लिविंग लाइफ अकिन टू एनिमल्स. जानवर की तरह जिंदगी जी रहे हैं. वो जानवर हैं या जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हैं. ओके, एंड दीस आर द सोसाइटीज व्हिच आर प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीगमी और promiscuous mating. Promiscuous का मतलब sexual morality कुछ नहीं है, anybody can mate with anyone. And that is why due to such kind of mating, polygyny or polygamy and promiscuous mating, there is indeterminate parentage. Indeterminate parentage का मतलब किसी को पता ही नहीं है कि उसका बाप कौन है. Okay, because of promiscuous sex and polygynous relationship, nobody knows who is means there is an indeterminate parentage. And since indeterminate parentage है, इस वजह से lineal और lateral नाम भी same है. Are you getting this? So this is why classificated kinship terminology. But जो descriptive वाले लोग हैं, वहाँ पे primarily the marriage is in the form of polygamy, sorry, monogamy. Okay, or polygyny in which one man can have multiple wives. But parentage एकदम clear है, जिसकी वजह से lineal और lateral relative में नाम अलग-अलग है. यहाँ तक clear हुआ? So this is how this two kinship terminology came. Now adding to it, he says the classificatory kinship terminology evolved to descriptive kinship terminology. Classificatory kinship terminology is an older version, and worldwide people will or the cultures will evolve towards descriptive kinship terminology. और इस बात को उन्होंने एक बुक में लिखा है, systems of consanguinity and affinity of the human family. ये बुक पब्लिश जिसमें उन्होंने ये थ्योरी दी कि दो टाइप की kinship terminology है, classificatory और descriptive. Classificatory is promiscuous sex and indeterminate parentage, and descriptive is जहाँ पे monogamy है, parentage एकदम clear है, and classificatory evolved to descriptive. अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ? कि why initially there was classificatory, तो हमने देख लिया कि classificatory क्यों थी? क्योंकि sexual morality नहीं थी, just like animals they were mating with anyone, and in that case it was not known कि who is the parent of whom. Okay, and अब ये descriptive की तरफ क्यों आई? Anybody can give me a reason? हाँ? नहीं, नहीं, हाँ? You are close to it. नहीं, नहीं, चलो देखते हैं.
हियर ही ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो लेकिन जब हंटर्स थे तो मेरे पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, कोई सरप्लस तो कुछ था ही नहीं, रिटेन साइड कोई लैंड, कोई सरप्लस, कोई प्रॉपर्टी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था। तो पेरेंटेज का इतना रोल ही नहीं था। राइट, पीपल यूज्ड टू लिव इन द ग्रुप, सबके बच्चे खेलने, सबका ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। अब मेरा कौन है कि उसे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज़ आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेशल टू गिव टू हिम, एनी प्रॉपर्टी, एनी लैंड, एनी महल या कोई बैंक बैलेंस, नथिंग लाइक दैट। सो दैट इज व्हाई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं। तो दिस वाज द काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, हर कोई मानती है, हर कोई बात, ठीक है, रिटेन साइड। बट द मोमेंट वी शिफ्टेड टुवर्ड एग्रीकल्चर, वी स्टार्टेड टू हैव सरप्लस, वी स्टार्टेड टू हैव द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड इन दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी वी हैव टू गिव, मींस हमारे पास किसी को वो देना होगा, अब वो कौन होगा, एंड देयरबाय देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस, बाद में थोड़ा लेट हो जाएगा अभी। So private property जब आ गई तो there was a need to pass it on to the next generation. In that case, there should be clear knowledge whosoever is my son, my daughter, isn't it? And that is why there was a shift towards descriptive terminology. And this is the idea that he used. But in इसके साथ साथ he just gives one particular idea. यार, so he just gives that idea that initially when there was a promiscuous relationship, like group marriage थी, a group of say brothers, they were marrying a group of women. ठीक है? So whenever there was an attack on a particular group for their wife या फिर for mates, so they used to basically try to protect their wives from external means. And जिसकी वजह से basically family की beginning शुरू हो जाती है. First of family would actually start, they will start protecting their wives. जो भी हमारी ग्रुप के लोग हैं उसको, and यहाँ से family का पट होगा, तो this is one of the reason कि family का पट होगा, and that's why parentage का idea clear होना जरूरी है, and that is why we will move towards descriptive. And second most important reason is the idea of private property. The moment private property will come, there will be a need to define who has to inherit this private property. And at that point of time, there is a need for clear cut idea of parentage, and that's why descriptive terminology will come up. Is it clear? So this is the basic idea, and this is the first idea related to kinship terminology, and anthropology में इन्होंने सबसे पहला idea दिया कि evolution of kinship terminology कैसे हो. ठीक है, just like this, and then we'll continue in the next class. Morgan, in his brief visit, in his brief visit to Iroquois, in his brief visit to Iroquois, collected data, collected data about their dance, games, religion, language, family, and material culture. Family and material culture. He compiled the data. He compiled the data in his book, The League of Iroquois. League of Iroquois. Its first scientific account. Its first scientific, or it is the first scientific account of an native Indian tribe. Native Indian tribe. Next slide. Here he observed that people use same term for father and father's brother. Same term for father and father's brother, and mother and mother's sister. Moreover, moreover, they trace their descent from mother's line. They trace their descent from mother's line. वहाँ पे पेटरी नहीं है, जैसे हम लोग अपने descent अपने father से trace करते हैं पेटरी में. It was matrilineal. Okay, so they trace their descent from mother's line. In Iroquois, political organization, political organization is an extension of kinship. An extension of kinship. A few years later, Morgan discovered that in similar kinship system was used by Ojibwa community. Ojibwa. He started to explore the relationship or kinship relationship in different societies. He sent a printed questionnaire requesting information about kinship terms. He sent a questionnaire requesting information about kinship terms. The responses, the data that he got from responses was compiled in a book. The name of the book is System of Consanguinity, System of and Affinity in Human Family. GUINITY. तो हाँ, ये consanguinity का मतलब आपको याद करना इजी हो जाएगा. कौन का मतलब consanguine का मतलब होता है blood relative. ठीक है. One means same, sanguine means blood. तो consanguine का मतलब होता है जो same blood या blood relative वाले हो. Consanguine उनको कहा जाता है, जो आपके blood relative होंगे. Affinity का मतलब होता है love. तो affine वो होते हैं जिनके साथ आपके marital relations हो. Okay, so all those relatives which are associated with you due to bond of marriage, जिनके साथ blood relation नहीं है लेकिन वो marriage की वजह से आप related हो गए. जैसे कि आप लोग के साथ related brother-in-law, sister-in-law, they will be affines, or husband and wife affines, but बच्चा, cousin and all, they will be भाई बहन, ये सब आपके blood relations हैं यार, consanguines. So this is what he used the word system of consanguinity and affinity of the human family. ठीक है. Here he basically just write जो data compile किया इस book में लिख दिया. He classified kinship system into two larger groups. First one, classificatory. And second one is ऐसे लिखो classificatory and second is descriptive. In classificatory के नीचे आप लिखो तीन मेजर Malayan, Turanian and Ganawanian. Turanian, Chinese and Japanese and Native Americans. Ganawanian. Semitic, Arab, Hebrews, Aryans, Sanskrit speaking people, Persians. Malayan, Maoris, MAORIS. ये तीन अलग सब ग्रुप्स हैं इसके अंदर. ठीक है. Although we do not need to go into this much detail, but let me tell you कि ये इसने बनाई क्लासिफिकेटरी से डिस्क्रिप्टिव तरफ इवॉल्व की है. इसमें से ये तीन सब ग्रुप हैं. Like the actual evolution is something like this: Malayan towards Turanian towards Ganawanian towards Semitic, Aryan and then Eulalian. ये इस ऑर्डर में. Hebrews. यूरोप और यूएसए वाले लोग, यूरालियंस. हाँ, मतलब ये पहली बार वहाँ पे लोकेटेड उसने यूरालियन बोल दिया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट यूएसए वाले और एंटायर यूरोप में भी वैसे ही है. ठीक है.
अब इसी के नीचे लिख लेना, मतलब ऑल्दो यहाँ पे स्पेस नहीं है। अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। यहाँ पे इसी के नीचे लिखो, हियर मैरिज इज ईदर पॉलीगेमस, मैरिज इज ईदर पॉलीगेमस, हाँ, क्लासिफिकेटरी के नीचे, मैरिज इज ईदर पॉलीगेमस, प्रोमिस्कुअस और कम्युनल, और कम्युनल, पॉलीगेमस, प्रोमिस्कुअस और कम्युनल। यहीं पे लिखना है क्लासिफिकेटरी के नीचे, मैनकाइंड इज इन ए कंडीशन similar to inferior animals, mankind is in a condition similar to inferior animals, mankind is in a condition similar to inferior animals। तो वहां पे लिख लो लास्ट लाइन, promiscuous sex and indeterminate parentage। जैसे एनिमल्स में होता है वैसे ही, promiscuous sex and indeterminate parentage। एंड डिस्क्रिप्टिव में आप लिख सकते हो, मैरिज was mainly based on monogamy, marriage was mainly based on monogamy and hence clear line of descent, clear line of descent और parentage, ठीक है। एंड ये लाइन ऐसे बना देना कि क्लासिफिकेटरी इवॉल्व टू डिस्क्रिप्टिव, क्लासिफिकेटरी इवॉल्व टू डिस्क्रिप्टिव। तो आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू विद एलएस मॉर्गन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।